Your Excellency, Mr. Gabriel Boric, President of the Republic of Chile, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, I welcome you to this ceremony where we shall witness some examples of India-Chile bilateral cooperation. These are, by the way of exchange of letters of intent, exchange program, memorandums of understanding, followed by press statement by the two leaders. First, we shall witness the exchange of letters of intent on Antarctica cooperation. This will be exchanged on the Chile side by Mr. Albert van Claveren, Minister of Foreign Affairs, and on the Indian side by Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister. Thank you, Ministers. Next, we shall have the exchange of the Cultural Exchange Program 2024 to 2028. This will be exchanged on the Chile side by Ms. Carolina Arredondo, Minister of Culture, Arts and Heritage, and on the Indian side by Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister. Thank you, Ministers. Next, we have the exchange of Memorandum of Understanding between the National Service for Disaster Prevention and Response and the National Disaster Management Authority on Disaster Management. This will be exchanged on the Chile side by Mr. Juan Angulo, Ambassador of Chile to India, and on the Indian side by Shri P. Kumaran, Secretary East. Thank you, sir. Next, we have the exchange of Memorandum of Understanding between Codelco and Hindustan Copper Limited, HCL. This will be exchanged on the Chile side by Mr. Maximo Pacheco, Chairman of the Board of Codelco, and on the Indian side by Srimati Abhilasha Joshi, Ambassador of India to Chile. Thank you, Excellencies. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of Ministry of External Affairs to conduct the remainder of the proceedings. Namaskar, good afternoon, ladies and gentlemen. Your Excellency, Mr. Gabriel Boric, President of the Republic of Chile, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, राष्ट्रपति बोरिच, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, होला। यह राष्ट्रपति बोरिच की पहली भारत यात्रा है और भारत के लिए जो मित्रता का भाव और संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता है, वह वाकई अद्भुत है। इसके लिए मैं उनका विशेष अभिनंदन करता हूं। मैं उनका और उनके साथ आए विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, भारत के लिए चिले लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण मित्र और पार्टनर देश है। आज की चर्चाओं में हमने आने वाले दशक में सहयोग बढ़ाने के लिए कई नए इनिशिएटिव की पहचान की। आपसी व्यापार और निवेश में वृद्धि का हम स्वागत करते हैं। हम सहमत हैं
कि इसमें और अधिक सहयोग का अनटैप पोटेंशियल भी है। आज हमने एक पारस्परिक लाभकारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने के लिए अपनी टीम्स को निर्देश दिए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में साझेदारी को बल दिया जाएगा। रेजिलिएंट सप्लाई और वैल्यू चेन्स को स्थापित करने के लिए काम किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में एक दूसरे की क्षमताओं को जोड़कर फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए सहयोग किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे, स्पेस तथा अन्य क्षेत्रों में भारत अपना सकारात्मक अनुभव चिले के साथ साझा करने के लिए तैयार है। हम चिले को अंटार्कटिका के गेटवे के रूप में देखते हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज दोनों पक्षों के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। भारत चिले की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। हम इस सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। यह खुशी का विषय है कि चिले के लोगों ने योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाया है। चिले में 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाना हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हमने चिले में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम इस क्षेत्र में एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार डिफेंस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म जैसी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए हम दोनों देशों की एजेंसी के बीच सहयोग बढ़ाएंगे। वैश्विक स्तर पर भारत और चिले सहमत है कि सभी तनावों और विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। हम एकमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तथा अन्य संस्थानों में सुधार आवश्यक है। हम मिलकर वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान देते रहेंगे। फ्रेंड्स, विश्व के मानचित्र पर भारत और चिले भले ही अलग छोर पर हो, हमारे बीच भले ही विशाल महासागरों की दूरी हो, किंतु प्रकृति ने हमें अनोखी समानताओं से जोड़ा है। भारत के हिमालय और चिले के एंडीज पर्वतों ने हजारों वर्षों से दोनों देशों में जीवन धारा को आकार दिया है। भारत में हिंद महासागर की लहरें उसी ऊर्जा से बहती हैं जैसे प्रशांत महासागर की तरंगे चिले के तटों पर को छूती है। दोनों देश न केवल प्राकृतिक रूप से जुड़े हैं, बल्कि हमारी संस्कृतियां भी इसी विविधता को अपनाते हुए एक दूसरे के करीब रही है। चिले की महान कवि और नोबेल लॉरिएट गैब्रिएला मिस्ट्रेल को रविंद्रनाथ टैगोर और अरबिंदो घोष के विचारों में प्रेरणा मिली। उसी तरह भारत में भी चिले के साहित्य को सराहा गया। चिले के लोगों में भारत की फिल्म्स, क्विजीन, क्लासिकल डांसेस में बढ़ती रुचि हमारे सांस्कृतिक संबंधों का जीवंत उदाहरण है। आज चिले को अपना घर मानने वाले लगभग 4000 भारतीय मूल के लोग
हमारी इस साझा विरासत के संरक्षक हैं। उनकी देखरेख के लिए मैं राष्ट्रपति बोरिच और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। आज दोनों देशों के बीच कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। हमने दोनों देशों के बीच वीजा प्रक्रिया को सरल करने पर भी विचार किया। हम भारत और चिली के बीच स्टूडेंट्स एक्सचेंज बढ़ाने के लिए भी प्रयास करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा से हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का सृजन हुआ है। इस ऊर्जा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे लैटिन अमेरिका क्षेत्र में हमारे सहयोग को नई गति मिलेगी और दिशा मिलेगी। मैं भारत में आपके सुखद यात्रा और प्रवास की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रासियास। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Gabriel Boric Font, President of the Republic of Chile, to give his remarks to the media. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. To everyone present here, to start with this press release for thanking the Prime Minister for the invitation given to me, who in last November during the G20 in Rio de Janeiro, where we were also invited to be part of the G20, was of useful nature of our participation. We share our relations with India and the possibilities of the potential which have not been explored yet should be worked upon. Today, we have come here to consolidate the 7 decades of our relation with India, which were more than, which are based in the earlier visits from Chile. I have the honor of being the 3rd president who is visiting India after the 16 years of Michelle Bachelet and earlier Ricardo Lagos. Now we have a cultural exchange. I'm not going to a specific number, but India has converted into the 7th position of our partner, which invites us to boost our relations with India in our personal and with our meetings, in open meetings also. We have spoken about our commercial relations, about the possibilities of investment, the increase, the importance of critical minerals in Chile. That is converting into a relevant topic or to face the global climate change, marking the present as the way forward for the future of this of the planet towards sustainability, and the case of technology development which we can share with India. But it is not just the commercial part, but rather the cultural aspect as well. We have spoken about spirituality. We have spoken about how this world, which requires more than money, but as a civilization which has such a long continuity like India, can be of great utility for all of us. Without any doubt, there are many opportunities on the landscape to boost our bilateral relations. The cooperation between Codelco and Industry Copper Limited, which has the objective of knowledge exchange and training to better their performances, and identifying the related activities of exploring the passages, also to see the benefits which can be drawn from the mineral industry, where there are times where there are threats at world level. The diversity of the Chilean economy is one of the main ideas of all the products like
para la estrategia de lithium, Chile. copper También is hablamos de one of the salud, major hablamos strategies de of agroindustria, Chile. en donde We talk podemos about consolidar a health. Chile como un We socio want to altamente consolidate confiable, por Chile supuesto, de as ciencia y a trustable tecnología e partner innovación. of sustainable Tres áreas technology en las and que tenemos innovation, muchísimos lazos, where we have a un lot of potencial linkages and tremendo que potential desarrollar. to develop with Chile India. Chile tiene como virtud el ser un país has the serio en el virtue mercado of being a internacional y respetado serious transversalmente. and respected Y es en base a country ese at the international prestigio level, el que and seguimos at en the búsqueda de basis más y of mejor this inversión que se ha prestige we sustentado try to find en out better los años de la investments. democracia chilena And the con years todos los of the presidentes que nos han democracy of antecedido, el presidente Chile, Elwin, el presidente whether it has Frei, been the el earlier presidente Lagos, presidents, la presidenta President Bachelet, el Lagos, presidente Piñera, y Bachelet, hoy día Pinera, who have been there, nuestro have pueblo. added to Es the por eso que hoy le democracy. comenté al primer ministro This is Narendra what Modi I sobre una medida con la que buscamos commented to potenciar aún más Mr. el Modi posicionamiento de India in the como un socio process clave. of as Vamos a implementar as un a permiso de key ingreso múltiple partner para for personas de Chile negocios de in India, multiple areas, tanto and also getting in startups touch como negocios with tradicionales, una startups medida and que a través de la businessmen autorización as a de measure múltiples ingresos for por plazos de multiple 90 días apuntaba a inputs facilitar which can be la atracción de facilitated oportunidades comerciales through the frescas opportunities a which Chile, can be beneficiando así offered la to both the conexión con countries nuestros países, and eliminando burocracias eliminating the que nada bureaucracy which is región there, se which is transforman en impeding the growth. También esta visita ha estado marcada Also, por la this cultura. visit has been marked Estamos by trabajando culture. firme para atraer We la are atención de la working potente together industria to bring audiovisual de about the India a través potent de nuestra audiovisual Universidad industry of Bilateral, India, celebrando un to nuevo bring it to shoot our in Chile, country evento with que the hayamos Shoot in desarrollado con éxito en otras Chile oportunidades y que nos program, permitirá exponer que somos un which we are tremendo going to destino present para la creación for de the producciones creation of audiovisuales. films Lo in Chile. comentábamos en la reunión, lo que ha hecho What we also lo spoke que ha hecho in the India meeting, what desde India has done Bollywood from es with its tremendamente importante presence of Bollywood is porque tremendously la important. expansión de la The cultura y la expansion difusión de of la the cultura desde una culture perspectiva no hegemónica and estadounidense a es sin lugar a non-hegemonic dudas un perspective aporte to be para poder expanded, visibilizar la to make diversidad it del mundo. visible the Y eso es diversity algo available in the world. que como chilenos y Like latinoamericanos también Chileans estamos and mirando many y hoy Latin día trabajando Americans, en conjunto. which we have been working and La looking riqueza at and cultural will de like to India como work de Chile upon marcan together. referencias con un mundo y con el primer ministro Modi coincidimos With en Prime la Minister COP24 Modi, porque we los G20 coincide encuentran in the relevante G20 promover meeting la to colaboración promote de the nuestro socio en esta collaboration materia. in this regard. Esto se ha formalizado This desde has been formalized 1993 en un acuerdo from de cooperación renovado en 1993, 2019 a través del again programa de intercambio renewed cultural para los años in 2019-2022. 2019 and Una alegría, 2022. We have quizás la renewed those noticia agreements. más importante de And esta this is the gira, most podemos important anunciar news que en that we esta can announce, visita that in this visit celebramos la we primera firma de un celebrate programa de the intercambio first cultural entre el Ministerio de exchange Cultura, las program Artes y el between Patrimonio de Chile y el culture Ministerio de Cultura and de the la Ministry India, of lo que World servirá, Heritage lo que with permitirá the Indian lograr, por counterpart, algunos ejemplos, la which promoción is de las going to artes y la provide cultura a través a de la base participación for en festivales boosting internacionales o la generación cultural de instancias exchange de of intercambio art en el área de and música y movies, danza. international fest. Chile es un país de 20 millones de Chile habitantes. is of La 20 India million de country, 1.400 20 million millones. inhabitants. India Y, is more sin than embargo, 1500 million pese a nuestra inhabitants. diferencia demográfica, So, in spite of our creemos geographical and que demographical podemos tener mucho más differences, en común, podemos we aprender can have a muchísimo más lot los of unos de los things in otros. common and we can Si learn bien a India es lot parte from each consultiva other. del Tratado Antártico de So, the part of 1983 the y mantiene una Antarctic activa participación en los where foros the del sistema India has Tratado maintained Antártico, an no active contamos hasta el exchange in the momento con un forums, mecanismo formal but de till consulta now we política en haven't la had materia. a political Para exchange Chile, as far as Antarctic is Antártica es de concerned. alta relevancia y somos Chile la principal has puerta de entrada Antarctic al as one mundo of the most important para issues. la Antártica. It's a way Por eso works hemos as a invitado gateway al primer ministro Modi a visitar la Antártica to y the hemos firmado Antarctic, una and carta we de have cooperación en invited materia antártica Prime entre Minister ambos Modi países para aprovechar to así visit nuevas oportunidades de Antarctica, profundizar and we have nuestro signed a cooperation relacionamiento deal y colaboración with our en asuntos area of claves exploration and vinculados al major continente. areas which we can También work together hemos with firmado un India memorándum regarding en Antarctica. entendimiento We have sobre also cooperación signed entre an Senapred MOU y la Autoridad with Nacional de Senapred Gestión de Desastres de la República and de India, que va a its permitir counterpart in facilitar la India, cooperación mutua which y is going to equitativa facilitate específica en el área de the gestión de riesgos y exchange of desastres y la reducción de regarding riesgos de disaster extinción management, which cada are vez there, más comunes en el which are mundo. very much common in the entire world. También hemos respaldado Also, we a la have backed India India en la aspiración de in the obtener un puesto aspiration permanente of en el a Consejo de permanent Seguridad post de la at the ONU United y, por Nations cierto, Security Council, en and la also reforma de los the organismos de reform gobernanza of the internacional que se han international demostrado organizations to para make
make them more efficient for the times that we are living in. En materia With de regards crisis to climática, climate estamos crisis, de acuerdo en que we are debemos in trabajar agreement juntos. La that we protección de must los work océanos es together algo que nos une. and protect the Por oceans ello, which
joins us. He reiterado al primer And I have ministro Modi que reiterated to firmeza Mr. Modi compromiso our con la firmness and our commitment towards the conservation of the maritime diversity and have explorations, and we will be able to have cooperation at international level. Estimadas y estimados, hoy estamos dando inicio Ladies a una and visita de gentlemen, we are Estado having que an creo initiation honestamente va a ser de of las a más visit importantes de which nuestro is mandato. going to bring about major Estaremos en Nueva decisions Delhi, in future. en Agra, en Right, Mumbai we are y going en to stay in Bangalore Agra, con diferentes Bangalore, agendas. Mumbai with Estamos different con una agendas. importante delegación We de are here autoridades del with Estado, de parlamentarios y major authorities parlamentarias, and de parliamentarians, científicos, de innovadores, scientists, de innovators, startups, de gente de startups, cooperativa, and de the estudiantes, de students profesores and de la educación professors pública, who are part of the de tutores del delegation yoga and y de la practitioners medicina of ayurveda. yoga and Todo esto Ayurveda. con el All objetivo these de people atraer that nuevas are here inversiones, the idea is to nuevas attract experiencias, investments and have acercar nuestros exchange lazos con of un país tan knowledge importante en and el mundo establish actual, our como es la relations India. and take it forward with Y hoy, a the 16 años countries de la of última so much visita de un jefe de importance in the Estado world. chileno, asumo con responsabilidad I have the el deber de seguir responsibility fortaleciendo to nuestras relaciones keep a on través de strengthening medidas tan our relations importantes como with these concretas. important areas Por as eso, very podemos concrete areas. anunciar, So we y esta announce sí here es, yo creo, that la noticia principal this is the main de este news viaje, today of this que visit, después de mucha that conversación, after a lot of después de mucho conversation trabajo de and a nuestras lot of work cancillerías y de un acuerdo al que through hemos our llegado con el ministro teams, Modi, con el primer ministro Modi, and after puedo the visit anunciar of que daremos Mr. inicio a las Modi, negociaciones that entre we India y have Chile por un acuerdo de reinitiated asociación of estratégica integral, we are going to have que a viene a formalizar comprehensive nuestro economic compromiso de trabajar partnership unidos y de forma agreement colaborativa and por el work together in a fortalecimiento de nuestra relación collaborative manner económica con miras to al strengthen beneficio mutuo, our algo que se mutual hace benefit, fundamental which is en going un to be mundo cada vez más fundamental in a convulsionado world y which is equivalente a un evolving, tratado de libre comercio. and talking about free Esto, trade. por supuesto, So será con la this flexibilidad de los will be diferentes available with a para flexibility que for sea different beneficioso para sectors, ambas partes. which are going Y to, nos hemos with the puesto idea plazos to be breves para beneficially, poder mutually concretarnos beneficial sin for lugar a all the dudas parts durante este año. during Agradezco al during primer this year. ministro Modi por I el thank sincero Mr. interés Modi de fortalecer for nuestra his relación bilateral, interest in colaborando bilateral en caminos entre cooperation estos dos países and for que forging the way ahead desde el hemisferio for sur, the del sur a collaboration sur, between South and están South explorando and nuevos caminos que exploring por años the han areas quedado which were rezagados en la política left mundial, pero que hoy in día a son secondary cada vez más space for many years, but now have become more central stage in these por areas. cierto, también And de la paz certainly en este mundo peace, convulsionado. we need to work towards it. Thank you, Mr. Modi, for this invitation, and please count on us for your visit and on Chile as your partner. Thank you so much. Thank you, sir. That concludes the press statements. Thank you for your presence.